નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી। સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, જેમના લેખક છે લલ્લુભાઈ રબારી। ભાગ 3, ભાગ 1 અને ભાગ 2 આપણે આગળ સમજ્યા। હવે ભાગ 3 થી શરૂઆત કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તક અને સાથે પેન્સિલ પણ રાખે। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। लेखक लल्लूभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगळना विडियोमां तमे लाखा वणझारा विषे माहिती मेळवी, तेना कूतरा विषे माहिती मेळवी के लाखो वणझारो શા માટે નામ પડ્યું લાખો વણઝારો? કારણ કે તે લાખોનો વેપાર કરતો હતો। માટે શું કરતો એ? તો કે શહેરમાંથી ઊંટ ઉપર ઘણો બધો સામાન લાવતો, ખાંડ છે, ગોળ છે, મસાલા વગેરે લઈને એ ગામમાં વેચતો અને લાખો રૂપિયા કમાતો। તેથી તેને લાખો વણઝારો કહેવામાં આવતો। અને લાખા પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો। જ્યારે રાતે વણઝારો છે એ સૂઈ જાય ત્યારે તેના પડાવની રખવાળી છે, ચોકી છે, એ આ કૂતરો કરતો અને જો કોઈ ચોર લૂંટાર આવે તો એને ભસી ભસીને દૂર ભગાડી દેતો। એક દિવસ વણઝારાને વેપારમાં ખૂબ જ નુકસાન ગયું, એટલા માટે એ રાધનપુરના એક શેઠ પાસે જાય છે અને તેની પાસે થોડાક પૈસા માગે છે। પણ શેઠ તેને કહે છે કે હું તને પૈસા તો આપી દઈશ, પણ તું એના બદલામાં ગીરવી શું રાખીશ, જમાનત માટે શું રાખીશ? ત્યારે લાખો કહે છે કે મારી પાસે કંઈ પણ વસ્તુ છે નહીં, હું તમને શું આપી શકું? કે તમે મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખો, હું તમારી બધી રકમ વ્યાજ સહિત, સૂદ એટલે કે વ્યાજ સહિત તમને બધી 1 વર્ષમાં આપી દઈશ। શેઠ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તારી પાસે આ કૂતરો તો છે, એ તું મને આપી દે। પણ લાખા વણઝારાને તો ખૂબ દુઃખ થયું, પણ શું થાય, છતાં તેને દુઃખી હૃદયે કૂતરાને શેઠ પાસે રાખ્યો અને પૈસા લીધા। આ બાજુ એક દિવસ શેઠના ત્યાં ચોરી થઈ। આ કૂતરાએ ચોરનો પીછો કર્યો અને જેટલો માલ સામાન લઈ ગયા હતા એની પાછળ પાછળ જાય છે અને જંગલમાં દૂર એક ખાડો ખોદીને ત્યાં સંતાડી દે છે અને ત્યાંથી બધા ચોર ભાગી જાય છે। અને આ બાજુ કૂતરાએ શું કર્યું, તો એ જોઈ લીધું કે આ માલ સામાન છે એ ક્યાં સંતાડ્યો છે, એટલે પાછો શેઠ પાસે આવે છે અને ભસીને શેઠની ધોતી પકડીને ખેંચીને એ આગળ ચાલવા લાગે છે અને શેઠને ત્યાં લઈ જાય છે જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન સંતાડ્યો હોય છે, ત્યાં લઈ જાય છે અને ભસી ભસીને કહે છે। અને થોડીક જ જમીન ખોદતા બધો સામાન બહાર આવે છે। શેઠ તો આશ્ચર્યચકિત રહી ગયા અને ખૂબ જ ખુશ થયા અને કૂતરાને શાબાશી આપવા લાગ્યા। ઘરે જઈને કૂતરાના ગળામાં બાંધેલા પટ્ટા સાથે ચિઠ્ઠી લખીને તેને છોડી દીધો અને કહે છે કે ભાઈ, હવે તું છે એ તારા માલિક લાખા પાસે તું જઈ શકે છે, હવે તું આજથી આઝાદ છે। અને આ બાજુ લાખા વણઝારાએ પણ વેપારમાં સારા પૈસા કમાવી લીધા હોય છે, એટલે શેઠને વ્યાજ સહિત રકમ ચૂકવવા માટે એ જ રસ્તેથી આવે છે જે રસ્તે કૂતરો જાય છે। દૂરથી કૂતરાને આવતા જોઈ લાખા વણઝારાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, નિરાશ થઈ જાય છે અને કહે છે કે આ કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો છે। એટલે કાંઈ પણ વિચાર્યા વગર જેવો કૂતરો એની નજીક આવે છે એટલે લાકડી વડે તેના ઉપર હુમલો કરી દે છે। કૂતરો છે એ બેહોશ થઈને નીચે પડી જાય છે
અને લાખાએ જોયું કે હવે એના ગળામાં, કૂતરાના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે. ચિઠ્ઠી ખોલીને તેણે વાંચ્યું તો લખેલું હતું કે લાખાને સંબોધીને કે લાખા, તારા આ કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત બધા રૂપિયા મને પાછા આપી દીધા છે. આથી મેં આ કૂતરાને છોડી દીધો છે, મુક્ત કરી દીધો છે, આઝાદ કરી દીધો છે. આ કૂતરાએ મારા ઘરમાંથી ચોરી થયેલા માલ સામાન મને પાછો અપાવવામાં મદદ કરી છે, પાછો અપાવ્યો છે. આ જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ થયો છું અને મેં મારી જાતે જ એને આઝાદ કરી દીધો છે. લાખો વણજારો તો એકદમ ચકિત થઈ ગયો અને રડવા લાગે છે, અવાજો કરવા લાગે છે, રાડો પાડવા લાગે છે કે આ મેં શું કરી દીધું. પણ શું થાય, જ્યારે ઉતાવળમાં એને આ પગલું ભરી લીધું પછી શું કરે છે કે કૂતરાનું શવ છે, એનું મૃત શરીર છે, એના ખોળામાં રાખીને એ ખૂબ જ જોર જોરથી રડવા લાગે છે. પરંતુ હવે શું, અબ પછતાએ હોત ક્યાં જબ ચિડિયા ચુગ ગઈ ખેત ક્યાં. હવે પછતાવાથી શો ફાયદો થાય કે નુકસાન હો જાને કે બાદ અર્થાત સમય નિકલ જાને પર પછતાવા કરને से કોઈ લાભ નહીં હોતા. આવું જ લાખા વણઝારા સાથે થાય છે. ત્યાર પછી લાખા વણઝારાએ શું કર્યું તો કે પોતાના આ કૂતરાની વફાદારી માટે એક સમાધિ મંદિર બનાવડાવ્યું અને પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના તળાવના કિનારે આ સમાધિ હજી પણ ઊભી છે. અને આ કૂતરાની વફાદારી આખી છે કથા છે એ સંસારને સંભળાવી રહી છે. આ તમે આ બે ભાગમાં તમે આ જોયું. ત્યાર પછી મુહાવરા આવે છે, કહાવત આવે છે, હવે આવે છે અભ્યાસ. આપણે અહીંથી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો प्रश्न नंबर 1 છે कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए. तो અહીં પણ તમે આ વાક્ય છે એ બધા જોયા અને લખ્યા પણ હશે. પ્રશ્નના ઉત્તર પછી શબ્દકોશ પ્રમાણે. ત્યાર પછી પેજ નંબર 14 પર પ્રશ્ન નંબર 4, 5. હવે આવે છે સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1. આટલું તમે આગળના 1 અને 2 ભાગમાં જોયું. હવે ભાગ 3માં આપણે સ્વાધ્યાયથી શરૂઆત કરીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી પેજ નંબર 14 છે એ ખોલીને રાખે. પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ. તો હવે અહીં થોડાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે. આ મુદ્દાઓ પરથી તમારે કહાની છે, વાર્તા છે એ લખવાની છે. एक नौकर द्वारा हार चोरी करना. सेठ का सभी नौकरों से पूछना. किसी का चोरी कबूल न करना. सेठ द्वारा युक्ति करना. प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना. जादू की छड़ी होने की बात कहना. दूसरे दिन दिखाने को कहना. चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी. घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना. दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना. तो હવે આ મુદ્દા ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે વાર્તા કઈ છે. તો ચાલો હવે તમારે આ વાર્તા છે ધ્યાનથી સાંભળવાની છે. આપણે આ વાર્તાનું શીર્ષક આપીશું શેઠ કી ચતુરાઈ. શીર્ષક છે શેઠ કી ચતુરાઈ. હવે કહાની સંભળાવું છું. વાર્તા તમારે ધ્યાનથી આ વાર્તાને સાંભળવાની છે कि सुंदर नगर में मणिक चंद नाम के एक सेठ रहते थे. उसके घर में कई नौकर चाकर रहते थे. एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई. एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया. सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई. उसने सेठ से हार की चोरी की बात की. सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की. सेठ बुद्धिमान थे. उन्होंने एक युक्ति की. उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दे दी और कहा, देखो
यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। आ હતી सेठ की चतुराई कहानी। सेठ की चतुराई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 આવે છે કે નીચે दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो અહીં પ્રશ્નના જવાબ તમારે આપવાના છે કે रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बीजो प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीजो प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो आ प्रश्न है तमने खबर ज हशे शा माटे आजाद करी दीधो। तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ત્યાર પછી છે કે इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। એટલે કે ઉતાવળથી કરવું જોઈએ નહીં, જલ્દબાજી में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। ત્યાર પછી पेज नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। हवे तमारे अहीं बाजूमां ज लखवानुं छे पेन्सिलथी। घोड़ा दौड़ रहा है तो लिंग परिवर्तन पुल्लिंग होय तो स्त्रीलिंग करवानुं छे। अहीं आवशे घोड़ी दौड़ रही है। ए ज रीते सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो आज वाक्य ने स्त्रीलिंग में परिवर्तन करवानुं छे। तो शुं आवशे। तो तमारे साथे पेन्सिलथी लखवानुं छे। चालो लखो। सेठनुं थशे सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। तेनी सामे ज लखवानुं छे। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा एनी सामे लखो पेन्सिल थी। सेठानी ने कहा
रुपये तो मैं दे दूंगी। ए ज रीते बीजू वाक्य छे, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे शब्दनुं स्त्रीलिंग रूप कयुं थशे? तो के बंजारीन। तमे आगळ आ शब्द छे ए जोया अने पाठ्यमां लखेला पण खरा। हवे ए ज शब्द अहीं तेनो उपयोग करीने वाक्य छे ए लखवानुं छे। बंजारेनुं थाशे बंजारीन। बंजारीन को बहुत दुख हुआ। त्यार पछी त्रीजું, ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी जग्याए शुं आवशे? ऊँटनी। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। ए ज रीते चौथું, मैदान में लड़का खेल रहा है। तो लड़कानी जग्याए शुं आवशे? मैदान में लड़की खेल रही है। एनी सामे ज तमारे वाक्य लखवानुं छे के मैदान में लड़की खेल रही है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 के बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहीं उदाहरण आपेलुं छे गाय तो बैल। तो हवे ए ज रीते तमारे आ बॉक्समांथी पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग शब्द आधारित छे गोतवाना छे अने पछी एनुं वाक्य लखवानुं छे। तो आ तमे नोटमां लखवानुं रहेशे। चालो नोट खोलो। विषय हिंदी, पाठ 3, स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 4 आटलुं लखीने शरूआत तमारे करवानी। शिष्य शब्द छे ए पुल्लिंग शब्द छे। तो शिष्यनुं स्त्रीलिंग शब्द शुं थशे? शिष्या। ए तमे अहीं जोई शको छो। पेली जे शब्द छे पेली हरोळमां के शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय। हवे बीजा લીટીમાં देव, बेल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी अने नाग शब्द आपेला छे। तो हवे शिष्यनुं लिंग परिवर्तन करवुं होय तो शुं थशे? शिष्या। ए ज रीते नागनुं थशे नागिन। त्यार पछी शिक्षकनुं थशे शिक्षिका, घोड़ानुं थशे घोड़ी, गायनुं आपेलुं छे गायनुं थशे बेल अने देवनुं थशे देवी। हवे आज आपणे वाक्य लखवाना छे। અહીંથી वाक्य प्रयोग आपेलो छे कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। ए ज रीते बेल किसान का दोस्त है। एवी ज रीते शिष्य। तो एनुं वाक्य शुं बनशे? तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। पछी शिष्यानुं वाक्य शुं थशे? तो शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग। तो एनुं वाक्य थशे नाग फण उठाए बैठा है। हवे लिंग परिवर्तन करीने वाक्य लखवानुं। नागनुं थशे नागिन, फण उठाए बैठी है। ए ज रीते शिक्षक। तो शिक्षक पढ़ा रहा है। हवे लिंग परिवर्तन करीने वाक्य लखवानुं। शुं थशे? शिक्षिका पढ़ा रही है। गायनुं आपेलुं छे त्यार पछी आपणे घोड़ा। घोड़ानुं थशे घोड़ी। तो महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। घोड़ीनुं वाक्य बनशे सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। देव तो देवी। तो देवनुं वाक्य शुं थशे? देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तो ए ज रीते लिंग परिवर्तन करीने देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आ सैनिक शब्द शुं छे? जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ए पण शुं छे? जातिवाचक संज्ञा। तो तमारे अहीं लखवानुं सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो अहींया तमारे शुं लखवानुं? जातिवाचक संज्ञा। बीजामां पण जातिवाचक संज्ञा अने त्रीजामां पण शुं आवशे? जातिवाचक संज्ञा। त्यार पछी पेज नंबर 16 भाषा सज्जता के नीचे दिए गए वाक्य
पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अहीं जो पहलो वाक्य जो आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तीजू छे हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथू नीम गुणकारी पेड़ है। हवे उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय तो कि कोई पण खास व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान ने जे दर्शावे छे तेने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे छे। त्यार पछी आगळ छे कि निर्देशित शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर खरानी साचानी निशानी करवानी छे। तो शेमां आवशे साचानी निशानी? हवे आगळ कीधुं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होय एमां आपणे साचानी निशानी करवानी छे। तो व्याख्या कई हती कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को, कि जेमां कोई खास व्यक्ति, प्राणी के स्थाननो दर्शावातुं होय तेने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे छे। कोई पण एकने कहेवातुं होय त्यारे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कई छे तेमां राइटनी निशानी करवानी छे। तो मोहन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा छे। गुजरात, तापी, वीर, सावरकर अने गिरनार आ बधी जेटला राइट कर्या छे बधा केवा छे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्यार पछी आपेलुं छे कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को लोक माता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा माटे तो जो शब्द पूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय तो कि जो शब्द आपवामां आवेलो होय ए संपूर्ण जातिनो बोध करावे तेने। कि आ सैनिक शब्द छे तो मात्र एकने ज नथी कीधुं पण जेटला सैनिको छे ए बधानी वात करवामां आवेली छे तेने जातिवाचक कहे छे। नदी तो अहीं मात्र एक नदीनी वात नथी पण घणी बधी नदीओ छे ए बधानी वात करवामां आवेली छे। गाय तो मात्र एक ज गाय छे एवुं नथी पण जेटली गाय छे एनो बोध करावे छे, जे दर्शावे। जे शब्द संपूर्ण जातिने दर्शावे तेने जातिवाचक संज्ञा कहे छे। अहीं आपेलुं छे कि कुत्ता वफादार प्राणी है तो मात्र एक ज कूतरानी वात नथी पण जेटला कूतराओ छे ए बधानी वात करावे छे। एटला माटे जे शब्द संपूर्ण जातिनो बोध करावे तेने जातिवाचक संज्ञा कहे छे। त्यार पछी पेज नंबर 17 पर जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। यादी बनावानी छे कया कया आमांथी जातिवाचक संज्ञा छे। तो जातिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय तो जे संपूर्ण जातिनो बोध करावे तेने। तो आमां जातिवाचक संज्ञा कई छे तो कि छात्र मात्र एक ज विद्यार्थीनी वात नथी, जेटला विद्यार्थीओ छे बधानी वात अहीं करवामां आवी छे। लड़का ए पण शुं छे? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, गाय, नदी, पेड़ आ बधा शब्द केवा छे? जे पूरी जातिनो बोध करावे छे तेवा। એટલા માટે તેને જાતિવાચક સંજ્ઞા કહે છે। ત્યાર પછી नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर लिखिए। हवे आमां वर्गीकरण करवानुं छे। आ जेटला शब्द आपेला छे भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़ वगैरह आ व्यक्तिवाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञा में तेनुं विभाजन करवानुं
છે। તો ચાલો, ભારત શબ્દ છે, પહેલો શબ્દ છે, એ શેમાં આવશે? વ્યક્તિવાચકમાં આવશે કે જાતિવાચકમાં? કોણ કહેશે? હાલો, જેને આવડે એ લખો। ભારત શબ્દ તો શેમાં આવશે? તો કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં। તો પહેલા ખાનામાં તમારે ભારત શબ્દ લખવાનું છે। ત્યાર પછી હિમાલય શબ્દ છે, તો હિમાલય શબ્દ જાતિવાચક કહેવાય કે વ્યક્તિવાચક? તો કે વ્યક્તિવાચક। તો લખો બીજા ખાનામાં વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાના બીજા ખાનામાં હિમાલય શબ્દ લખો। ત્યાર પછી નદી શબ્દ આવે છે, તો એ નદી શબ્દ વ્યક્તિવાચક છે કે જાતિવાચક? એ આપણે આગળ શીખ્યા, જાતિવાચક શબ્દ કહેવાય કે વ્યક્તિવાચક? તો નદી છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે, એટલે જાતિવાચક સંજ્ઞામાં તમારે નદી લખવાનું। ત્યાર પછી વીર સાવરકર, તો એ માત્ર વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવેલી છે, એટલે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। ત્યાર પછી સૈનિક, તો સૈનિક છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવે। ત્યાર પછી નર્મદા શબ્દ, તો કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં આવે। પર્વત એ આવે જાતિવાચક સંજ્ઞામાં। ત્યાર પછી નીમકા પેડ, તો એ આવે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં। ત્યાર પછી પેજ નંબર 18માં યોગ્ય વિસ્તાર છે, કેસે બોલતે, અહીં આપવામાં આવેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાઠ 3 પૂરો થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।